Hi guys, welcome back to Classic of Planning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class all about the question जो आपको prepare करना है for your exams. And these are just 10 questions. सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन पूरे पेपर के लिए. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बोला था, अब हम बात करेंगे सिर्फ 10 क्वेश्चंस हर पेपर से. वो 10 क्वेश्चन जो करने के बाद हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी. We need not do anything else, but make sure that ये 10 के 10 परफेक्ट हो जाए. These 10 must be your best ones. So guys, let's start the class. कुछ चीजें क्लियर करते हैं. If you're not subscribed my channel till now, guys, do subscribe the channel क्योंकि यहाँ पे आपकी हर वीडियो आपको मिलेगी. और किसी तरह कोई डाउट होता है या किसी यूनिवर्सिटी रिलेटेड लगता है कि यार ये वाली यूनिवर्सिटी के नोट्स नहीं मिल रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें. I'll come up with the notes. अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जिन यूनिवर्सिटी में श्योर है कि ये क्वेश्चन आपने करने उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं. जिनके नहीं आए, don't worry guys, I'm going to come up with the videos for your university. So let's start and check out these 10 questions. So सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें ऑन टिप करना है, that be, please write down what do you mean by mental retardation. I repeat the question, what do you mean by mental retardation? Discuss its types and characteristics. क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना. मैं बोर्ड पे लिखूंगा डेफिनेटली, लेकिन आप लोग प्लीज साथ में लिखते हैं तो बेटर रहेगा. What do you mean by mental retardation? Discuss its types and characteristics. So here the first question we are having. What do you mean by mental retardation? Discuss its types and characteristics. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए. आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल रिटार्डेशन, डिस्कस इट्स टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. कम अप टू क्वेश्चन नंबर 2. हियर वी आर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी. I repeat the question, what do you understand by diversity? Diversity क्या होती है? मतलब आप में, मेरे में, हम सब में diversity है. Then discuss the various type of differences in children with special needs. पेपर का नाम ही creating an inclusive school है, तो पूरी तरह से उन पे डिपेंड करेगा. Question number 2, here we are. What do you understand What do you understand by diversity? Discuss its various types of differences in children with special needs. So we repeat the question, what do you understand by diversity? Discuss various types of differences. Now difference children with the special needs. Come up to the question number 3. Here we are, and this is really an expected question. I really want you guys to work out this question. Explain UN Convention on rights of persons with disability. Right of person with disabilities or disability. Here this is known as to CRPD. So guys, याद रखना है आपने कि आपने ये क्वेश्चन कंफर्म करना है. ये आपको किसी फॉर्म में पेपर में मिल सकता है. Explain UN Convention on Rights of Persons with Disability, CRPD. Come up to the next question, question number 5. Here we are, straightforward question होगा. What do you mean by special education?
What do you mean by special education? Explain. So the question number 5, here we are. What do you mean by school readiness? I repeat the question को पूरा समझेंगे. What do you mean by school readiness? What are its essential elements? Explain. इन सब की पूरी वीडियो है आपके पास. जिसको नहीं मिलती कमेंट बॉक्स में है कि इस आंसर की वीडियो नहीं मिल रही है. You're going to get the video. उसको पूरा क्लियर कर पाएंगे आप. So come on, next question. What do you mean? What are its elements? What are its essential elements? Explain. So this is the question number 5. What do you mean by school readiness? What are its essential elements? Discuss. Come up to the question number 6, and here we are with the question number 6. तो पहले 5 के 5 को ऑन टिक होने चाहिए आपको, and I hope कि आपको समझ में आया, अच्छे से क्लियर कर पाएंगे. और इन सब के आंसर्स ऑलरेडी रेडी हैं. यू कैन गेट इन फॉर्म ऑफ नोट्स. इन 10 आंसर्स आपको पूरे पूरे रेडी मिल जाएंगे. कम अप टू द क्वेश्चन नंबर 6. What do you mean by inclusive classroom? I repeat. What do you mean by inclusive classroom? Discuss characteristics and component of an inclusive classroom in detail. So here we are. And components of an inclusive classroom in detail. So this be our question number 6. I repeat the question. What do you mean by inclusive classroom? Discuss characteristics and components of an inclusive classroom in detail. Jump to question number 7. What are the roles and responsibilities? ये 100 पेपर में हुआ. What are the roles and responsibility of a regular teacher in dealing with different types of handicapped children or in the atmosphere inclusive classroom? Here the question is.
So the question number 7, here we are. What are the roles and responsibilities of a regular teacher in dealing with the different types of handicapped children? So ये थे first 7 क्वेश्चन. Remaining 3, yes will come with the remaining 3. तो उससे पहले अगर आपने नहीं लिखा तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट हम आगे बढ़ पाएं, फिर किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा गाइस. कम अप टू द नेक्स्ट. So it's a time to discuss the question number 8 and we'll come with the question number 8, that is what is peer tutoring? I repeat the question, what is peer tutoring? Differentiate it from cooperative learning. Peer tutoring क्या है, इसको हमने differentiate करना है किसे, cooperative learning से. So here the question number 8. What is peer tutoring? Differentiate it from cooperative learning. What is peer tutoring? Differentiate it from cooperative learning. Come up to the question number 9. Here we are. The question number 9. What do you mean by assistive design? Assistive devices. Discuss the need and importance. So here the question 9 for all of you. What do you mean by assistive devices? Discuss the need and importance. Now come to the last question, question number 10. The short notes, and here we are, the short note, the first one, it's children with special needs. Children with special needs. Come up to the big part, inclusive education. Come to C, rehabilitation council. Come to the fourth part, that is D, it's locomotive disability. So these are the last 4 short notes. First one, children with special needs. Second, inclusive education. Then rehabilitation council 1992 you can add in. Then locomotive disability. So guys, ये थे 10 क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर द पेपर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल. अब किसी बच्चों को डाउट है, कोई पेपर नहीं आ रहा है या किसी पेपर में क्वेश्चन नहीं पता लग रहे कि कौन से करने हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालो, यू विल गेट द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. टिल देन कीप वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब. वी थिंक इट्स वर्थ टू वॉच. बाय गाइस.